Okay, the question that we'll be doing here is now this question. It's saying that you have to create a 5-letter word. Task to be performed in a function word is take 5 single length characters as input from the user. Return a 5-letter word by combining all the characters in the user given sequence. So what you have to do is, the question is saying that you are taking a 5 single length characters from a user. That means this C you are taking as an input, O you are taking as an input, D you are taking as an input, E and S. These are the 5 inputs that you are taking from the user, right? And what you have to do is you have to create a function which will return this codes as a single word. इनका combine करके एक codes हमारे पास single word बन रहा है, right? So let's do it. And how will we doing it? So I'll be doing okay, one more thing. ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द कोड यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. अगर आप ये यहाँ पे गिवन कोड में देखोगे तो आपके फंक्शन एक बना रहा है जहाँ पे उसका क्या रखा है वर्ड, एंड यहाँ पे आर्ग्स एज एन आर्गुमेंट रखा है यहाँ पे. दैट मीन्स यू हैव टू पास हियर एज ए parameter here, right? So what I will do here is I will do first thing first. So I will take an input from the user. I will say c1 character 1 is equal to input, and that's it, right? So if you will see here कि यहाँ पे C के आगे कुछ नहीं दिया है, so you will not be doing anything here. You will just take the input here and control C. I will take the second, third, fourth and fifth, right? So 5 you have to take, so I will change the name 2, 3. You can keep any name, it's up to you. 4 and 5 here, right? So these are the 5 characters that you are taking from the user as an input. Now, so from here, so what you will do is, since the question is not saying whether you have to return or something like that, so it's up to you whether you will use a return function or not. So let me use here return function. So then I will use here print. I will use here print and I will call the function. What is the function name here? Def word. So I will call here the function as word, and here it is saying that you have to pass the argument. So I'll pass the arguments, that is c1 comma c2 comma c3 comma c4 comma c5, right? These are my 5 inputs that I'm taking from the user, right? And those will be saved in this args, right? So different ways are here. So let me give you the one easy way here. So as we were doing previously, so I will create here one. Let's say I'm saying string because I have to combine the word, and I will say string is equal to one empty string, right? So we know this args is a tuple, so I can iterate over this args. So what I will do here is I will say something like this: for val young character, let's say ch, you can give any name here, ch in args, right? So what I will do is I will combine, so whatever is coming ch means जो भी C1 के अंदर है, that will be the first position here. Okay, I will explain it, don't worry. So what I will do here is I have to add it to the string. So I will say string, and here I will say plus equal to what, ch, right? And once we are done with creating a word, so I will say here return, and what I will return, the string. That's it. मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया है तो यू हैव टू डेफिनेटली यूज़ हियर रिटर्न. अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो तो नो नीड टू कीप हियर रिटर्न, बिकॉज अदरवाइज इट विल गिव यू द नन एज द आउटपुट एज वेल, वन एडिशनल आउटपुट, राइट? सो लेट्स से हियर आई विल गिव द इनपुट. फर्स्ट इनपुट आई एम गिविंग इज C O D E S, right? And it is giving the output as codes, right? So if you want to understand this thing, so it will be like this. Okay, now understand the code here. So you are defining here function, so obviously this will be executed only when you will call this function, otherwise it will not be called. So you are defining the function has been defined, this has been defined, this has been defined, this has been defined, this has been defined. Now you are saying C1 input, right? That means this line will be executed, right? So let's say I'm giving here the C as the input. That means this C will be stored in C1, right? Then this line will be executed. It is again saying input, so I'm giving here O. That means C2 is getting here O. D, I'm saying this D is here in the C3. E will be stored in F4. Then C5 line will be executed, and I will say S here, and it is stored in F5, right? यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बस values store हो रहे हैं. Getting this point? After that you are saying print.
okay, print inside the brackets you will be solving here, and here you are doing the function call. यहाँ पे क्या हो रहा है, function call means कि ये function को call हो रहा है. जब इस function को call हो रहा है, that means these lines will be now executed. and यहाँ पे आप पास क्या कर रहे हो, C1 में क्या होगा स्टोर, C, C2 में स्टोर क्या है O, C3 में स्टोर क्या है D, C4 में स्टोर क्या है E, एंड C5 में स्टोर क्या है S. राइट. सो जब आप ये वैल्यूज कोड्स यहाँ पे पास कर रहे हो, एंड यहाँ पे कहाँ पे स्टोर है, आर्गस मीन्स एक टपल बन रहा है आपका बाय द नेम आर्गस. नाउ यू नो टपल इज हैविंग द सिंपल ब्रेसेस हियर, एंड इसमें स्टोर क्या हो रहा है, जो भी आपने यहाँ पे पास किया है. C1 इज अ वेरिएबल, एंड C1 के अंदर क्या वैल्यू प्रेजेंट है, दैट वी आर पासिंग हियर. दैट मीन्स इस आर्गस में क्या आएगा, यहाँ पे C, O, D, E, S, right? Codes. Now you know here what is the index number of this? 0, index number 1, index number 2, index number 3, index number 4, right? Now यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक simple string एक create कर रहे हो, empty string. You are creating one string, that's your empty string. एम्प्टी स्ट्रिंग आपने एक क्रिएट कर लिया जिसमें कुछ भी वैल्यू पास प्रेजेंट नहीं है. नाउ यू नो फॉर CH इन आर्गस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे पाइथन के, तो यहाँ पे आप वो चीज़ रख सकते हो. अगर आप रेंज फंक्शन या तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो या तो कुछ और यहाँ पे, देन आप कोई वो चीज़ रख सकते हो जो आइटरेबल होगा, जिसके ऊपर आप आइटरेट कर सकते हो, तो वो डायरेक्टली वैल्यू आप देगा. It will not give the 0, 1, 2, 3 as a value, क्योंकि 0, 1, 2, 3 as a value they will be given by the range function. बट अगर आप यहाँ पे आइटर पर रख रहे हो, यानी कि अगर आप यहाँ पे लिस्ट रख रहे हो तो डायरेक्टली वैल्यू देगा, स्ट्रिंग रख रहे हो तो डायरेक्ट वैल्यू देगा, टपल रख रहे हो तो डायरेक्ट वैल्यू आप ले सकते हो. सो फॉर CH इन आर्गस मीन्स इनिशियली CH का वैल्यू होगा whatever is the initial value of this args, that is C, that means this store C has been stored in CH. now यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, string plus CH आप concatenation कर रहे हो, आप बोल रहे हो जो भी string में वैल्यू है, string में कुछ वैल्यू है नहीं है, उसको ऐड कर लो C से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा C. गेटिंग. सो यहाँ पे फिर आप वापस जहाँ पे जाओगे फॉर लूप पे, राइट. नाउ CH इट विल टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंड CH प्रीवियसली इट वाज C, नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, CH का वैल्यू O, दैट मीन्स O इज नाउ स्टोर्ड इन CH. राइट. नाउ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग प्लस CH, जो भी स्ट्रिंग में वैल्यू है, स्ट्रिंग में वैल्यू क्या है C, उसको कंकैटिनेट कर लो O से, तो क्या बन जाएगा C प्लस O, इट विल बी इक्वल टू CO, एंड CO को स्टोर कर लो C स्ट्रिंग में. राइट. फिर से आप वापस आ जाओगे, अब CH का वैल्यू क्या होगा D, एंड यू आर अगेन सेइंग हियर स्ट्रिंग प्लस CH, स्ट्रिंग में क्या है CO, और D को ऐड कर लो, सो D बन जाएगा यहाँ पे. ऐसे ही एटरेट करके ES भी आ जाएगा. राइट. सो आफ्टर यू आर रीचिंग टू द लास्ट, अब ये फॉर लूप यहाँ पे स्टॉप करेगा, देन यू आर सेइंग रिटर्न स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर है, स्ट्रिंग के अंदर क्या स्टोर है, कोड्स. दैट मीन्स इस स्ट्रिंग की जगह हमें क्या आ जाएगा, इनडायरेक्टली कोड्स, एंड इस कोड्स को रिटर्न करोगे कहाँ पे, जहाँ से आपने कॉल किया. दैट मीन्स यहाँ पे इस होल चीज़ की जगह क्या आ जाएगा आपका CODES, एंड देन आप बोल रहे हो प्रिंट कर दो क्या, कोड्स, एंड आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है, कोड्स. आई होप यू अंडरस्टूड इट. राइट. देयर इज वन मोर वे, एंड दैट कैन बी समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट आई विल से इज रिटर्न dot join, and I will say here args. I run this program and I am giving here CODES, and you are getting the codes as well. Or this is the one more way using which you can solve this problem. We'll see you in the next video.